वेलकम टू द बॉक्सिंग क्लब नेम्ड एज रियल मैड्रिड, जहाँ पे हर दिन हमें एक ना एक नई न्यूज मिलती ही है। एंड कुछ इस तरह होगी अब इस क्लब की हालत कि ऐसे लगता है वो एक सीरीज आती थी ना, कीपिंग अप विद कडाशियंस, वैसे एक बंदा चाहिए कीपिंग अप विद रियल मैड्रिड। जब देखो कुछ ना कहीं चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑन विद एक न्यूज जो सबसे पहले बाहर आती है कि रुडिगर ने करेरास को बजाई, कान के नीचे बजाई। एंड उसके आगे एक और न्यूज अभी आती है विच इज कि ट्रेंट ये सब chaos देखते हुए रो रहा। I think this is very close to a Desi Big Boss episode, and I think a lot of people are already calling it that Real Madrid is becoming a reality TV show. And why not? मतलब यार ये सब कहाँ पे होता है? And I understand people are there with high testosterone. There is a lot of aggression because football is an aggressive sport, and you are required to be like that. And in that, there can be heated moments, but a moment where potentially you are now thrashing your own teammate, and then अगर इसको up करना है तो the incident that caused even more fire, that is the Chouamini versus Valverde, the WWE of these two Galacticos. And it is so crazy because, just to give you a small gist of it before we draw the storyline, basically the whole chaos ended up with Valverde getting stitches. Potentially he was unconscious for quite some time, and then he was supposed to be taken to a hospital. यस। So यार इतना तो नहीं होना चाहिए कुछ भी करो। Stupid से PR statements भी आ रहे हैं Instagram पे कि nothing happened, I just slept and I fell कहीं पे तो छोटा मोटा लग गया, but bro we all know what happened। and ये जो स्टेट देख के आई एज अ मैड्रिड फैन, आई फील कि वी नीड अ गुड मैनेजर लाइक जोसे मरीनियो, जो ये सारी ईगोज हैंडल कर सके एंड हु कैन bring something out of this team. It's a good sign that we have a lot of guys with ego, and this is a sign of kind of high testosterone. Not exactly related, but Absolutely. everyone is a captain or plays a vicious role उनके team. Because yeah, and again, a lot of times the whole narrative that comes in ki because these guys are like some of the best in the world, and that's why there are huge egos, there are certain mentality that comes in, and then when the team is struggling, I think वो aggression थोड़ा और अलग वे में निकलता है, and then of course there is always that thin line between aggression and frustration. दोनों सरपास होकर then it becomes violence. Yeah. I don't agree to it because guys, Madrid has been home to big egos across I don't know how many decades. मतलब तुम सोचो, बेल, बेंजेमा, रोनाल्डो, मॉड्रिच, क्रूस, रामोस, पेपे, मार्सेलो, कावाहाल, कैसिलास, अगर उस टीम को हम लोग बिग ईगो टीम नहीं बोल सकते, and if we consider these kids to be that, this is so weird. मतलब oh, that team has done three-peat, that team has done a lot of things. On in comparison, ये लोग अभी भी बच्चे हैं, ये लोग अभी भी novice हैं, and then they cannot go around with such huge egos, with such huge attitudes, and then such shit discipline. आई थिंक कोई एक मैनेजर आ जाए बस यहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ खबीब आए इन्हें मैनेज करना एंड मस्त में इन सब की गुद्दी लाल करे, बिकॉज ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। आफ्टर एम्बापे द टीम हैज गॉटन रियली वर्स, बिकॉज अगर तुम देखो PSG आफ्टर एम्बापे इज विनिंग एंड मैड्रिड आफ्टर एम्बापे इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग। So we don't know how it's gonna end next season. Also, I have no expectations at all because कहीं ना कहीं स्क्वाड रिवैम्प की भी बातें चल रही है। इन दोनों पे वाल्वर्डे एंड चौमेनी पे फाइन बैठता ऑलमोस्ट अराउंड 5 लाख यूरोज या समथिंग वैसे था। एंड आई रियली डोंट थिंक कि उन्हें उससे फर्क पड़ेगा। There should be some sort of barely their weekly wage, तो हफ्ते भर में कमा लेंगे। There should be some sort of strict actions against such things ताकि ये वापस ना हो। एंड जब तक ये नहीं होगा या किसी प्लेयर को निकालोगे भी किसे यार, इट्स अ हार्ड डिसीजन। यू डोंट गेट प्लेयर्स टू फायर देम। And yeah, so just to give you guys certain light and to tell you how crazy this incident is and why it is a big deal and we should actually think about it, is because Valverde and Chouamini were never the troublemakers. Rather, according to the reports, according to the people whom we have been spoken to, the staff that has been spoken to, and वो लोग के voices जो है, उसके हिसाब से Chouamini and Valverde are known to be some of the most professional players, most consistent, most hardworking within the Real Madrid ecosystem for last 2-3 years. So जब ये लोग अगर इस edge तक thrash on हो रहे हैं जहाँ पे then it converts into violence,
there is a bigger thing that is broken inside that dressing room, and I think there is a genuine chaos that Real Madrid is trying to suppress. मैच चल रही है और हमारे हीरो एम्बाप्पे जस्ट बिकॉज ही इज इंजर्ड ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम कहीं पे उसके गर्लफ्रेंड के साथ आई मीन डूड योर सीजन इज गोइंग ऑन एंड देयर आर so many narratives going around. It's your responsibility to be over there एटलीस्ट टीम को सपोर्ट करते हुए, बट नहीं हम तो चिल करेंगे. एंड फिर आता है कि हमें बताया गया था कि तुम थोड़ा चिल कर लो बाय मैड्रिड का मेडिकल स्टाफ, व्हिच इज क्वाइट अमेजिंग. एक वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है जहाँ पे एम्बाप्पे आउट करके बना के रखा है एंड बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे साइन कर दिया. तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 million people want him to leave Madrid. Absolutely. As you're a Real Madrid fan, I have some questions for you. So there are two big narratives that are coming on. Either there needs to be a very, very strong people manager in that position who can manage these egos, or rather there should be a club revamp, a squad revamp that should be done with a strong management and of course a strong manager. What do you think? What do you support? I feel firstly let's give it a try. Let's give full responsibility and control to a manager. Let him handle. Let's see what we get out of that manager next season. If it kind of leads to better outcome compared to जहाँ हम हैं इस season, then yes we can go ahead with the same approach. But अगर हमें outcome नहीं मिल रहा वैसा, then we might have to think about rebuild because इस टीम से ना तो प्रेसिंग होती है, इस टीम से ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं होता, इस टीम से काउंटर अटैक नहीं होता. तो इस टीम से होता क्या? Do you think this team has also lost that UCL mentality that Madrid is known for? 100% भाई. Agreed. कहाँ एक टाइम था टीम्स यूज्ड टू बी स्कैर्ड 90th मिनट पे भी गोल पड़ सकता, बट अभी आए जाए कोई भी बचा के Mentality monsters. I still remember. I think Madrid का second leg था. They were supposed to do a crazy comeback. Everyone was in a lot of tension, except potentially what we have heard is Modric and Kroos. They were playing cards in the dressing room, and then they come up, they make the comeback happen, and then there it is. The three-peat happens. But yeah, that's what it is insane. One crazy thing that I had seen. So when all of this chaos was happening, a very cute Don Carlo reel came to my Instagram feed, which was during his Bayern Munich days. So in the Bayern Munich days, I think the team is losing, and it is only the 60th minute, and Ancelotti decides to replace Ribery, and he calls him for substitution. Ribery is super pissed. From his position on the field, वो आ रहा है, वो full गुस्से में है, वो स्टैम्प वैम्प किया है, उसके शक्ल पे दिख रहा है. And जैसे ही वो line cross करता है, and he comes close to Don Carlo goes to him, hugs him, gives him a kiss on his cheek, and उसी time पे you can see Ribery switching from anger to he just gives a smile, hugs him back, and चुपचाप चले जाता है अपने dugout में. As we are talking about Ancelotti, also one more thing, guys. 2-3 years back, Ancelotti always wanted Harry Kane, but Perez ने उसे Harry Kane नहीं दिया because any choice if you are getting Mbappe for free, तो क्या ही जरूरत है. बट जस्ट इमेजिन करो अगर एंसेलोटी के हाथ में केन जैसा प्लेयर लग जाता इंस्टेड ऑफ जोसेलू, हम कहाँ होते हैं, हम क्या अचीव किया होता मैड्रिड ने. बट दैट्स व्हाट इट इज. लाइक अभी फिलहाल हमारे पास एम्बाप्पे है एंड सैडली यू हैव टू डील विथ योर प्रॉब्लम्स. So let's see what happens. Does a crazy manager comes in, or is there a revamp? Let's see what happens. But I think Real Madrid, things will be very exciting as well as anxious because यार किधर भी जा सकता है यहाँ से. There's a lot of chaos, but let's see what happens. Football will surprise. 200 ट्रॉफी सोच ही मत दे. नहीं होने वाला.